Morning, Good morning, ma'am. Yeah, mute yourselves. We'll wait for a while for others to join, okay? Okay, ma'am. Okay, I'm going to share my screen. So what we were doing yesterday, fringe width, right? Yes, ma'am. I just told you the Yes, ma'am. expression and then you people did one numerical. So we were like calculating the fringe width expression and the screen was not visible to you. So we'll start again today. So we want to find the expression for fringe width. So I'll start from the beginning. So let's say P is the point of nth bright fringe. P is the position of nth bright fringe. I'll write it properly. Please mute yourself. It's not working. Okay, it is saved. I'll move on to next slide. Okay, so this was the experimental arrangement. Slit S1 and S2. This is the screen at a distance. What was the distance of screen from the slits? Capital D. Capital D. Capital D. What is the distance between the slits? Small Small d. d. Small d. Small d. So we want to find the expression for fringe width beta. That is distance between, yeah, the distance between consecutive bright fringe or consecutive dark fringe. So we will consider the case of distance between consecutive bright fringes.
That is, we want to find what is the distance between two consecutive bright fringes. That is, we want to find the distance between nth bright fringe. Let's denote its position by n. Either we can find the distance between nth and n minus 1th bright fringe, or we can find the position of n plus 1th bright fringe and nth bright fringe, and this distance, that is, this will give us expression for beta. Is it clear? That is, fringe width is the distance between two consecutive bright fringes. So after nth bright fringe, the consecutive bright fringe will be n plus 1th bright fringe. Clear? So what Yes, we are ma'am. going to find is xn plus 1. What is xn plus 1? Position of n plus 1th bright fringe. Position of n plus 1th bright fringe on the, कहाँ पे position ये? Screen. Screen. On the screen. Yeah. Screen. Similarly, xn is the position of nth bright fringe on the screen. So first we will find what is xn. We are saying that the rays, they will meet at this point P, which is the position of xnth, that is nth bright fringe. So this is the center of the slits, center between the slits. Let this point on the screen be O. So basically this distance OP will be equal to xn. That is how you locate the position P of bright fringe on the screen. You will write OP is equal to xn, which is position of nth bright fringe. So we have to find what xn is. So how we will start? What is this angle? This or this angle? Theta. Theta. Right? Now you can see this triangle S2P. Let's say this point P dash. Now in this triangle S2P, in triangle S2P P dash, what will be sine theta? Ma'am, xn PP dash by S2P. Yeah, P dash by S2P. S2P. What we will do is we take this angle will also be theta. So we will take this triangle. Let's say this central point is C. So in triangle CPO, at this, in triangle CPO. Now tell me what will be sine theta? Xn upon C. XN by CO. Xn CP. Small t. Yes, ma'am. Xn by C. CP. C. Okay. So let's assume, or if we say that if the screen is placed at very large distance from the slits, screen is at very large distance from the screen. What we will assume?
Ma'am, theta is very small. And CP is equal to Theta is CO. very small, or CP is approximately equal to CO. Clear? If this screen is far away, like placed here, then this CP is approximately equal to CO. This point is clear? If this screen is very far away, like here, now point P will be here or point O will be here. If you join the C like this, CP or CO, they approximately will be equal. As you are placing your screen farther and farther away from the slits, CP will can be approximated as CO. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone ma'am. has any doubt regarding this assumption? Theta will be small, hence CP will be approximately equal to CO. What is CO? Capital D. Capital D implies CP is equal to capital D. So from equation 1, you can write sine theta. From equation 1, you can write sine theta is equal to xn divided by CP की जगह क्या लिखोगे D. So xn is equal to D sine theta. Now can you tell me the path difference between the rays meeting at point P? You first note this down. Ma'am, small d sine theta. Small d Yeah, sine theta. you first note this down. We'll move ahead after this. Okay.
मैम यहाँ पे जब एंगल बहुत छोटा है तो यहाँ पे साइन थीटा को थीटा के बराबर नहीं लेंगे। नहीं, बिकॉज साइन थीटा विल बी रिप्लेस्ड। अभी इसके बाद साइन थीटा ही रिप्लेस कर देना है, सो इट इज नॉट नीडेड। Because if the quantity is, it will replace itself, then there is no need to replace this now. We will write in place of sine theta, in terms of path difference, we will write. We don't want to find angular position. We want to find the translational position. If we replace sine theta with theta, we will only get angular position. In terms of theta, we will get. मैम लिख लिया। Done? Done, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So I will remove this and keep. So xn is equal to d sine theta, we have got. So can you tell me the path difference between rays S1P and S2P reaching at point P? Ma'am, small d sin theta. Yeah, so this is the path difference. If we draw a perpendicular over here, this is the path difference which we denoted earlier with the delta. So delta, which is the path difference between the rays. S1P and S2P. What is the expression for delta? Tell me, what is the expression for delta? D sin theta. Small d sin theta. Small d sine theta. Yes. And condition for bright fringes. What is the condition for bright fringe? Nth bright fringe. What should be delta? Delta should integral multiple equal of to lambda. yeah, n lambda. Right? So put this value. Yes. So n lambda is equal to d sine theta. From here, you can get the value for sine theta. So sine theta is equal to n lambda by d. So putting this value of sine theta, we get xn is equal to t into n lambda over d. So this is the position of nth bright fringe. You can give this equation as number 8. इसको स्टार दे लो,
ठीक है, using star we get this expression for x. Write this down. Who had doubt regarding sine theta that we have not replaced sine theta with theta? Who had doubt from you? यस मैम, डाउट क्लियर हो गया. Okay. Noted, ma'am. Okay. So everyone Yes, done? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so you people will tell me now. We have to find the expression for fringe width beta, and it is equal to xn plus 1 minus xn. Xn we have found. So how you will continue for beta? What will be our next step? What should be our next step? मैम ये ब्राइट फ्रिंज निकला है ना, तो देन डार्क फ्रिंज का निकालेंगे. No, we have to find the distance between bright fringes only. We don't n की need जगह dark n fringe plus for वन. I. प्लस वन निकालेंगे मैम. Yeah. x n Plus plus 1 वन. निकालेंगे और n plus 1 निकालेंगे. Yes. So we will write similarly. If this is the expression for nth fringe, similarly the expression for position of n plus 1th fringe x n plus 1, what will it be equal to? Ma'am, n plus 1 D, lambda yeah. capital D So upon small d. simply replace n by n plus 1. So dn plus 1 lambda divided by d. So if we want to find beta, which is equal to xn plus 1 minus this xn. So what will be equal to n plus 1 lambda by d minus d and lambda by d. So क्या आएगा आंसर? Beta is equal to Lambda capital D upon small d. यही एक्सप्रेशन लिखा था यही एक्सप्रेशन, राइट? Yeah, so we have got Yes, this ma'am. expression. So you can try one thing yourself, as we have calculated the position of nth bright fringe using the condition for bright fringe, that is delta is equal to n lambda. Similarly, you can calculate the position for nth dark fringe, xn dash, where this is the position of nth dark fringe. Simply replace delta. What was the condition for dark fringe? 2n plus 1 lambda by Will be 2. the yeah, 2n plus minus 1 lambda by 2. Anything you can use. If you put these conditions and you find the position for dark fringe, similarly, we have done it now, you will get the same expression. That is beta is equal to lambda capital D over small d. So irrespective of how you are calculating the beta, either you are calculating from the distance between consecutive bright fringes
or the distance between consecutive dark fringes, expression for beta is same. This one. What does it indicate? That the fringe width is same. This is dark one, this is bright, this is dark one. So fringe width is same for bright or dark fringes. It is consistent throughout the interference pattern. As lambda wavelength of light, you consider if you take only one wavelength for one experimental setup, capital D will be constant, right? You fix the screen from your slits. Similarly, you have fixed your slits, so the distance D will also be fixed. So for that interference pattern, fringe width beta will be fixed. You note this down. This you can do yourself for dark fringe if you want to. Okay, one thing you tell me, as beta does not depend upon n, what does this mean? Ma'am, it means that the bit is independent of the position of the fringe gauge. The fringe will be same as any point if we take it in infinity or at the Yeah, center. yeah, or more accurately, you can put it like that fringe width is same for all order fringes. If it does not depend upon n, it means every order fringe is of equal width, whether it is first fringe, second fringe, or third fringe. Every fringe has equal width. So let me know when you all have written this down.
Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so okay, I'll show you one of the videos for interference. Just watch it, okay? On screen. I'm going to stop sharing for a while. Let me click on the video, then I'll start sharing, okay? Interference of waves. Is it audible to you? Yes, ma'am. Yes, Phenomena ma'am. of the light which undergoes refraction and reflection. Can be explained by the two theories of interference of waves. The phenomena of the light which undergoes refraction and reflection can be explained by the two theories of light. They are the corpuscular and the wave theory of light. But some of the other phenomena, such as interference and diffraction, can only be explained by the wave theory of light. We know that two or more wave motions travel in space at the same time. Sometimes these two wave motions combine and some physical effects take place. Interference is one such physical effect. When two or more waves cross each other in the same medium, they both interfere and an accident takes place. This accident is known as the interference of waves. Interference is the combined effects of the disturbance caused by each individual wave at the same place at the same time. This effect can be understood from the principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. To understand this concept of the superposition, let's understand some of the examples. When we drop a pin in a tank, we see some circular waves. When another pin is dropped, we see some more waves. These waves travel in the same tank, and at one time or another, they superimpose on each other. The resultant wave would have an amplitude which is the sum of the displacement due to the individual waves. The principle of superposition of waves states that when two or more waves traveling through the same medium simultaneously, the resultant displacement at any point is the vector sum of the displacement due to the individual waves. In our case, the pin is dropped in a ripple tank with two pins. If y1 is the displacement caused at a point due to the first source, and y2 is the displacement caused by the second source, then the overall displacement r at the point of interference would be given by r equals y1 plus y2. When both sources have the same amplitude, then y1 and y2 would be equal to y. When y1 is due the crest or trough, and y2 is also due a crest or trough, the resultant would be the maximum. And when y1 is due to a crest and y2 is due to a trough, or vice versa, the displacement would be minimum. When maximum displacement takes place, it's called constructive superposition. And when minimum displacement takes place, it's called the destructive superposition. In constructive displacement, a maximum displacement curve is produced. Thus, when constructive displacement occurs, the phase difference between the waves would be 0, or a multiple of 2. When minimum displacement occurs, waves superimpose destructively. The phase difference of the waves would be an odd integer multiple. Interference of waves. When superposition of waves occur, they can be destructive or constructive. This physical effort
observed as a result of the superposition of waves is called interference. The physical effect of the superposition of waves from the source vibrating with the same frequency and amplitude is called the interference of waves. The physical effect is in the form of vibrations in the amplitude of the resultant wave in a given portion of the medium. Interference is a special case of superposition of waves, which originate from different sources but have the same amplitude and same frequency. So yeah, it's over. Interference topic is over. The next topic is diffraction. I'll continue, but before that, before the diffraction, I want to show you some video. Your first unit is relativistic mechanics. Okay, for that, I'll discuss about this video after watching the video. So we will start watching this video. It's a long video. You also people watch this. If you have any doubt or anything, we will have a discussion after video is complete. Okay. Okay, ma'am. So start preparing your mind. It's from the relativity. First unit is relativistic mechanics. We'll continue diffraction after this video. After having a discussion over this also. जीवन एक ऐसी शक्ति जिसे हर तरफ महसूस किया जा सकता है। आकाश, पाताल और जमीन, हर जगह इसके अंश किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जब से धरती बसी है, इसके कण कण में बसा जीवन एक लय में थिरक रहा है। और जीवन के इस लय को निर्धारित करती है गति, यानी मोशन। वो नियम जो पता नहीं कब से गति को निर्धारित करते चले आ रहे हैं। हां, ये अलग बात है कि मनुष्य को इसकी जानकारी करीब 300 साल पहले ही हुई, जब दुनिया ने इन नियमों को एक नए नाम से पहचाना। सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने हमें यह बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में तब तक रह सकती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। ये बल उसकी गति को एक खास दर से बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। परंतु गति और उसके नियमों के साथ ये प्रश्न भी उठा कि गति का निर्धारण कैसे किया जाए। जैसे मान लें दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हो, तो उन गाड़ियों में बैठे यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन स्थिर नजर आएगी, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति उन गाड़ियों को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हुआ मानेगा। तो प्रश्न ये था कि ट्रेन की गति का मान किसके अनुमान पर निर्धारित किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान पर या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के अनुमान पर। जवाब था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वस्तु की गति का मान अनुमान लगाने वाले व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा, अर्थात वो स्थिर अवस्था में अनुमान लगा रहा है या गतिशील होकर। संक्षेप में कहें तो निष्कर्ष था, गति निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। पर गति को सापेक्ष मानने के बाद उससे एक और सवाल जुड़ गया, क्या भौतिकी के बाकी सारे नियम गति की तरह सापेक्ष होंगे? उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई गाड़ी में भौतिकी या भौतिक नियमों से जुड़ा कोई भी प्रयोग कर रहा हो और दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर
वही प्रयोग कर रहा हो तो क्या दोनों के परिणाम अलग होंगे? जवाब था नहीं। 17वीं सदी में अपना स्वरूप प्राप्त कर रही भौतिकी यानी फिजिक्स ने सापेक्षता का पहला सिद्धांत दिया, और वो ये कि स्थिर या एक समान गति की अवस्था में फिजिकल लॉज यानी भौतिकी के नियम नहीं बदलेंगे। गैलीलियो और न्यूटन के जमाने से ज्ञात क्लासिकल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से मशहूर सापेक्षता का यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक बिना किसी चुनौती के कायम रहा। पर तभी तक जब तक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के सिद्धांतों पर किए गए प्रयोगों ने यह साबित नहीं कर दिया कि एक ऐसी गति भी है जिसका मान स्थिर है, और वो है प्रकाश की गति। चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन का अध्ययन करते हुए मैक्सवेल ने यह पाया कि इस मोशन से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, वो एक तरंग के रूप में उस चार्ज पार्टिकल से निकलती हैं। मैक्सवेल ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कहा, और जब इन तरंगों की गति का गणितीय आकलन शुरू किया तो पाया कि इसका मान वही है जो प्रकाश की गति का है। परंतु एक समस्या तब भी थी, और वो थी माध्यम यानी मीडियम की। उस वक्त ध्वनि आदि बाकी तरंगों की तरह प्रकाश के गमन के लिए भी एक माध्यम की कल्पना की गई, जिसे ईथर कहा गया। पर ईथर को सच मानने का मतलब था पृथ्वी के साथ उसकी गति से घूमते हुए ईथर की दिशा में प्रकाश की गति और उसकी विपरीत दिशा में प्रकाश की गति में फर्क आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। माइकलसन और मोरले नामक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा यह साबित किया कि प्रकाश की गति का मान दो विपरीत दिशाओं में एक ही है, जिसका मतलब था ईथर नामक कोई माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी प्रकाश की गति का मान किसी माध्यम के सापेक्ष नहीं बल्कि निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट है, और हर दिशा में एक समान है। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का आरंभ वैज्ञानिक हलचलों का समय था। प्रकाश की गति के स्थिर मान यानी कांस्टेंट वैल्यू की धारणा ने एक वैज्ञानिक के अंदर ऐसी बौद्धिक हलचल मचाई कि उससे पैदा हुई उसकी सोच ने न्यूटन के गति के नियमों की सर्वमान्यता को जड़ से हिला दिया। इस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रकाश की गति अगर कांस्टेंट है तो इसे स्थिर या गतिशील किसी भी परिप्रेक्ष्य में कांस्टेंट होना चाहिए, और इसे उन्होंने गणितीय रूप से साबित भी किया। आइंस्टाइन ने यह कहा कि चूंकि गति स्थान और समय का अनुपात होती है, इसलिए गति के मान को स्थिर रखने के लिए स्थान और साथ साथ समय को भी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बदलना होगा। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में दो कल्पनाएं थी, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस और रिलेटिविटी ऑफ टाइम। इनमें रिलेटिविटी ऑफ स्पेस की कल्पना वैज्ञानिकों को पहले से भी कुछ परिचित थी, लेकिन रिलेटिविटी ऑफ टाइम बिल्कुल ही नई थी। तो आप रिलेटिविटी ऑफ स्पेस की कल्पना इस तरह से कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि दो निरीक्षक हैं, एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और दूसरा एक ट्रेन में से उसके सामने से गुजर रहा है, जो कि ट्रेन काफ़ी रफ्तार से जा रही है। ट्रेन पर का जो निरीक्षक है वो अपनी एक गेंद ऊपर उछालता है, जो सीधे ऊपर जाके फिर नीचे उसकी हाथ में आ जाती है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर का निरीक्षक है उसे क्या दिखाई देता है? उसे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो ट्रेन है उसकी रफ्तार के कारण जो गेंद है वो सीधे ऊपर जाके नीचे नहीं आती, बल्कि आगे की ओर घूमती है और एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में वो ऊपर जाके नीचे आती है। तो ये जो दो निरीक्षकों की दृष्टि में फ़र्क है, ये रिलेटिविटी ऑफ स्पेस से जुड़ा हुआ है। अब रिलेटिविटी ऑफ टाइम यानी दो निरीक्षकों की घड़ियाँ एक चाल से नहीं चलती, ये कल्पना तो बिल्कुल ही अजीब गरीब थी, जिसकी आइंस्टाइन के पहले लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। आइंस्टाइन ने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा ये बताया
कि गतिशील माध्यम में स्पेस कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित होगा, पर समय का अनुमान ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एक चलती ट्रेन में एक मीटर रॉड रखा हुआ है, तो आइंस्टाइन के अनुसार उस मीटर रॉड की लंबाई ट्रेन के बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए कम हो जाएगी, और उसी ट्रेन में एक घड़ी रखी हो तो बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए वही घड़ी स्लो चलेगी, यानी उसके लिए समय ट्रेन में देर से बीतेगा, जबकि ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए रॉड की लंबाई और घड़ी के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर ऑब्जर्वर चलती ट्रेन में हो और घड़ी तथा रॉड बाहर हो तो वही परिवर्तन दिखाई देगा। पर आइंस्टाइन के गणितीय समीकरण के अनुसार ये स्पेस और टाइम का वेरिएशन तभी अनुभव किया जा सकता है जब किसी गतिशील माध्यम की गति प्रकाश की गति के करीब हो, जबकि हमारे आम जीवन में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी भी हमें ये अनुभव नहीं दिला सकती, क्योंकि उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वाली प्रकाश की गति की तुलना में रत्ती मात्र भी नहीं। यही कारण है कि स्थान और समय की सापेक्षता को हम आम जिंदगी में महसूस नहीं कर पाते। आइंस्टाइन की ये अवधारणा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से विख्यात है। पर सवाल ये उठता है कि जिस सिद्धांत को गणितीय रूप से आइंस्टाइन ने बखूबी साबित कर दिया, क्या उसका कोई प्रमाण भी है? आइंस्टाइन ने अपना रिलेटिविटी का सिद्धांत गणित के रूप में सिद्ध तो कर दिया, लेकिन भौतिकी में यह अपेक्षा रहती है कि ऐसे कोई भी सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा या निरीक्षणों के द्वारा जांचे जाएं। तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पर भी काफ़ी प्रयोग हुए, और उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयोग था जब 1977 में नासा ने सैटेलाइट पर घड़ियां छोड़ी जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा के फिर वापस आई। तो इस चक्कर लगाने में घड़ियां जिस चाल से चल रही थी वो पृथ्वी पर के निरीक्षक के हिसाब से उनको रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार धीमे जाना चाहिए था, और बिल्कुल वैसा ही नज़र आया। ये घड़ी जो ऊपर से सैटेलाइट में से घूम रही थी, उसकी टाइम कीपिंग हमारी पृथ्वी पर की घड़ी के मुकाबले धीमी रही, और ये धीमापन रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार ही था। आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी अवधारणाएं कल्पना में जन्म लेती थी और गणितीय सूत्रों और समीकरणों द्वारा साबित होती थी, जिन्हें बाद में वैज्ञानिक प्रायोगिक तौर पर भी सही पाते थे। और यही आइंस्टाइन की एक वैज्ञानिक के तौर पर महानता थी। 1905 के आसपास जब आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर लिखा, उस वक्त वो स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे थे। यही वो समय था जब अपनी रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और क्रांतिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो एक छोटे से गणितीय सूत्र के रूप में उनके नाम से हमेशा के लिए जुड़ गया, और वो फॉर्मूला था E = mc²। इसका मतलब था कि मास यानी वस्तुमान एनर्जी में और एनर्जी मास में बदल सकती है। आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी रिलेटिव है और किसी वस्तु की गति बढ़ने से उसका मास भी बढ़ेगा। रिलेटिविटी ऑफ मास ये भी एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु अपना वेग बढ़ाती है, हमें ऐसा लगता है कि उस वस्तु का वस्तुमान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस वस्तु का आकार भी बढ़ता जाए, बल्कि उसका वस्तुमान वही बढ़ता जाता है, और ये जो वृद्धि है ये उस वस्तु की ऊर्जा की वृद्धि से जुड़ी हुई है। और आइंस्टाइन का जो मशहूर समीकरण है E = mc², ये हमें यही बताता है कि ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसका परिणाम हम वस्तुमान में होने वाली वृद्धि में देखते हैं, और इसी E = mc² के आधार पर आगे चलकर वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया। स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ इतना साबित करके आइंस्टाइन का वैज्ञानिक दिमाग संतुष्ट नहीं था। उन्हें एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था, और वो ये
कि स्पेस और टाइम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में कैसे व्यवहार करेंगे। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच की ग्रेविटेशनल पुल तात्कालिक यानी इंस्टेंटेनियस होती है और ये बात धरती और सूर्य के साथ भी लागू है। पर अगर हम ऐसी कल्पना करें कि सूर्य नष्ट हो गया है तो हमें इसका पता 8 मिनट बाद लगेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। पर न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी का प्रभाव तात्कालिक होता है, इसलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के नष्ट होने का पता तुरंत यानी प्रकाश के धरती पर पहुंचने के पहले ही लग जाना चाहिए, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मूलभूत सिद्धांत से मेल नहीं खाती। इसके अनुसार कोई भी फिजिकल इंटरैक्शन या परिणाम प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता। इसी विरोधाभास ने आइंस्टाइन को न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा पर पुनः सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके लिए आइंस्टाइन ने चुना अपनी ही पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को। धरती द्वारा पैदा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अंदाजा लेते हुए गणित की कवायद एक बार फिर शुरू हुई और इस बार नतीजा और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने ये दावा किया कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री को प्रभावित करती है, यानी स्पेस और टाइम की हमारी रेखा गणितीय परिकल्पना बदल जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से दो बिंदुओं के बीच की सीधी या न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा ना होकर एक कर्व्ड लाइन होगी। आइंस्टाइन ने जो कर्व्ड स्पेस टाइम की कल्पना सामने रखी वो समझने में कुछ कठिन लगती है, क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं और जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं वो यूक्लिड की ज्योमेट्री है जो फ्लैट स्पेस टाइम के बारे में बताती है। अब फ्लैट स्पेस टाइम और कर्व्ड स्पेस टाइम, इनका फ़र्क क्या है, इसे देखने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं एक हवाई जहाज़ का रास्ता है जो लंदन से शिकागो जाना चाहता है। तो इस उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज़ ऐसा रास्ता चुनता है जो सबसे कम लंबाई का हो, क्योंकि इससे पेट्रोल की बचत होती है। तो आप कहेंगे कि यहाँ लंदन है, यहाँ शिकागो है, तो इस सरल मार्ग से, जो कि सरल रेखा को बताता है, सीधी रेखा को बताता है, इसको क्यों नहीं लेता? तो इसका जवाब ये है कि पृथ्वी गोल है, इस पर जो ज्योमेट्री चलती है वो कर्व्ड है, और ये कर्व्ड ज्योमेट्री हमें बताती है कि ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर जाके फिर नीचे आता है, ये रास्ता सीधे आपको जो सीधा लगता है उससे कहीं कम लंबाई का है। तो कर्व्ड स्पेस टाइम में कुछ ऐसे परिणामों को हम देखते हैं। होता यह है कि प्रकाश की रेखाएं तो सीधी ही जाती हैं, पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से कर्व स्पेस से गुजरने के कारण ये मुड़ी हुई नजर आती हैं। पर सवाल ये था कि जो अवधारणा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए लागू है, क्या वो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी लागू है, यानी इक्विवेलेंट है? आइंस्टाइन का जवाब था हाँ। उनके अनुसार अगर एक व्यक्ति धरती पर किसी एक कमरे में बैठा हो या फिर धरती के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही एक्सेलरेशन से जाती हुई किसी अंतरिक्ष यान में बैठा हो, तो उसके स्थान और समय के अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा। आइंस्टाइन ने इसे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का नाम दिया। इस अवधारणा को आइंस्टाइन्स एलिवेटर नामक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए भी समझा जा सकता है। हम ऐसे एलिवेटर की कल्पना करें जो स्पेस में धरती की तरफ फ्रीली गिर रहा है, लगभग उसी तरह जैसे आपके बिल्डिंग का एलिवेटर केबल कट जाने से गिरेगा। फ्री फॉल की इस स्थिति में एलिवेटर में खड़ा कोई व्यक्ति किसी भी तरह से ये नहीं जान सकता कि उस पर या उसके द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रयोग पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव है। उसे अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पता ही नहीं चलेगा, यानी वो अपने को भारहीन महसूस करेगा। इसलिए उसके आसपास में, जैसे कि एलिवेटर के अंदर, रिलेटिविटी
Okay, we will continue this video tomorrow. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so I'm ending the meeting today. Thank you, ma'am. attendance ले लें Thank you. Attendance Attendance, I've taken the attendance. Yes. Thank you, ma'am. So, Okay, thank ma'am. you. Thank you.